students, welcome on my video. In previous lecture we discussed transaction through bank and I hope you all are understood. So now we are going on a new topic in the journal, transaction of revenue and expenses. So you all know what is the meaning of revenue. Revenue means one type of income. Okay students, so let me started our sum number 9. सो आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन आपको शो हो रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए. देन लेट वी स्टार्टेड अवर सम. सो इन दिस सम फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ अरुण ईयर 2014 मंथ August. So for what is the first transaction? For business, books of accounts purchase rupees 650 rupees. सो फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस के लिए हमने बुक्स ऑफ अकाउंट परचेज किया हुआ है 650 रुपीज़ की. दैट मीन्स बुक्स परचेज की. सो हमारा एक्सपेंस हुआ स्टेशनरी एक्सपेंस. सो हियर स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी expense account debit to exchange of the book. We paid the money, so cash goes out from our business. So to cash account credit with 650 rupees. Okay students, so first में क्या किया हमने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स परचेज के लिए बिजनेस के लिए. सो उसके सामने हमने कैश पेड किया. सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट विथ 650 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट विथ 650 रुपीज़. नेसेसरी नरेशन नोट डाउन कर दो. बीइंग स्टेशनरी इज परचेज. सेकेंड ट्रांजेक्शन, वेजेस ऑफ 200 and carriage of rupees 100 paid in cash. So wages and carriage both are expense. So in the second date, first transaction wages paid, that means wages account debit, wages account debit, carriage account debit. Here we do contra transaction. So यहाँ पे हमें सब जर्नल एंट्रीज नहीं करनी, हम लोग डायरेक्ट कॉन्ट्रा जर्नल एंट्रीज ही कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो कैरिज अकाउंट डेबिट रिस्पेक्टिवली 200 and 100 to both are expense. So to cash account credit with addition of this both expenses, that means 200 plus 100. So to cash account credit with 300 rupees. Next transaction 8 number, commission received rupees 800. So in this transaction we receive the money from the another person on the basis of commission. So commission is the one type of our income. So income is always credit and commission के बेस पे हमें क्या रिसीव हुआ है, कैश. सो कैश कम्स इन. सो कैश अकाउंट डेबिट टू commission account credit with 800 rupees. ओके स्टूडेंट्स, कमीशन क्या हमारे बिजनेस के लिए इनकम है. अगर आपको स्टूडेंट्स फार्मूला नहीं बट रूल्स, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपको लर्न होने चाहिए. और सेकंड थिंग क्या है कि कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है. अगर आपने चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस नहीं देखे सो प्लीज़ गो ऑन चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट, सी द वीडियो ऑल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 10th नंबर, पेड ऑफ रुपीज़ 2500 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप. अब यहाँ पे हमने पेंटिंग करवाया हुआ है शॉप, दैट मीन्स मेंटेनेंस हुआ यहाँ पे. सो मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पेंटिंग करवाया हुआ है हमारी शॉप में. सो हमने मेंटेन की है हमारी शॉप में. सो 2500
Clear? Next one is 20th number. Light bill of the 1800 paid by check. So here we paid the electricity bill by check. That means हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है. So सबसे पहले तो एक्सपेंस है उसको डेबिट करेंगे. So electricity expense account debit with 1800 to हमने कैसे पेड किया स्टूडेंट्स? बाय चेक. सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट with 1800. Next one is 25th number. Rupees 1200 paid for refreshment and inaugural function of the shop. अब हमने कोई शॉप में इनोग्रेशन करवाया हुआ है कोई शॉप का, तो हमने रिफ्रेशमेंट के 1200 रुपीज़ पेड किए हुए स्टूडेंट्स. सो दिस इनोग्रल फंक्शन एक्सपेंस इज अंडर एज अ सन्ड्री एक्सपेंस. वो नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं. सन्ड्री एक्सपेंस मीन्स नॉर्मल एक्सपेंसेस. सो रिफ्रेशमेंट है वो भी हमारा सन्ड्री एक्सपेंस में. सो हियर सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज हमने एक्सपेंस पेड किया हुआ है विथ 1200 रुपीज़. नेक्स्ट वन इज 13 नंबर. अ चेक ऑफ रुपीज़ 900 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज. अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स चेक रिसीव किया है. दैट मीन्स आवर बैंक बैलेंस इज इंक्रीज. So on the basis of this transaction our bank balance is increased. So bank account debit and what is our income? Brokerage. So to brokerage account credit with 900 rupees. Last transaction of this sum. A currency note of rupees 50 eaten by goat. अब 50 रुपीज़ की करेंसी नोट गॉट ने खा ली है. अब क्या करना है हम? सो दिस इज आवर नॉर्मल एक्सपेंसेस. सो हियर सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट अगेन वी डू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट credit with 50 rupees. So now last process of the journal entries is total of the debit and credit column. So let me do total. Total of debit and credit column is 8200 and also credit total is 8200. So here our sum is over and I hope students you all are understood. If you have any doubt so please comment on this video. Thank you.